Hello and welcome. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Umar Khan. I'm back with another session and another guest. And yet again, I'm very excited to introduce my guest for today. When I talk about my guest for today, well, she has a very deep association with Greenwich University. She has been the favorite teacher of lots of students and we're really close to her. So, without any further delay, let me introduce our guest for today. We have with us Ms. Mahwash Amer Lodhi, who is the head of credit risk management, Summit Bank Limited. She also was associated with a Canada firm, recruitment firm, in the years 2013 to 2017 that used to recruit people for the banking sectors, the three largest banking sector. Let me correct myself. And during her teaching days, the courses that we used to learn from her were mostly related to economics, and one of her own favorites were business research methods. So, without any further delay, welcome, ma'am. Hope you're doing well. I'm absolutely doing very well. Thank you very much, Umar, for having me on your show. I've been looking at quite a lot of programs that you've been doing every day with a lot of commitment and my colleagues, friends that I know from Greenwich. So didn't know I would be here, in one of the programs, but thank you very much for having me over. The pleasure is all ours, and thank you so much for taking out time. Indeed, everyone is looking forward to the show, and the basic reason for these sessions is not just to share the experience that you have, but at the same time, a reunion for the entire Greenwich family and all the wonderful years that we've spent together. So, ma'am, how have you been spending all of your time during this COVID-19 situation? So I'm not going to say that I did take off because people were really not going to offices and they were staying home, considering that the pandemic has really, made people stay at home and keeping that social distance. But my thing was a little different. I actually look after credit risk management at a bank. So this is exactly the area that has to work when there is a situation like what is happening right now. So I did actually made my team go on alternate days, and we were trying to keep less people in the office as much as we can. But I was actually there every day. So I sincerely did not have a day off to myself, first of all. And reason being that you understand, being a credit risk head, I have to really gauge the risk the credit now has, considering that businesses would not be able to do well in the next, I wouldn't say a year, but couple of years. Because the way the pandemic has hit the business, we really have to strategize ourselves. And State Bank has also, there's so many circulars, there's so many warnings, there's so many relaxations to businesses. So I, being the head of credit risk, had to be there at all times to make sure things are going well. So I really did not have a day off to myself. So that is something very kind of अफसोस सा हो रहा है क्योंकि जहाँ लोग सारे पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे there are वहाँ people मैं like काम कर रही हूँ। वहाँ आप काम कर रहे हैं but then again we're talking about the situation and as you said the business aren't going to be well for the couple of years in the coming future. So how do you think this will affect the banking sectors? Because then again, people are being very reluctant to put in investments. People are very reluctant to use their cash. People are coming towards the selling part and survival mode. So how does that affect the whole banking sector? Good question. I've been actually telling my teams also. When since I look after credit risk, so a part of my job is to look after risk mitigation also. Now, in normal course of action, when there's nothing like that, there's no calamity, no pandemic, no fear, no nothing, no economic distress. What we do is we have a separate department which takes care of business continuity plans. अच्छा उस डिपार्टमेंट को ना nobody really gives a lot of attention के ठीक है that's there state bank के rules follow कर रहे हैं वो. But as soon as this entire thing happened, we realized that we have to have a disastrous recovery management unit working
24/7 to make sure that if, say, everything is at halt, how to make sure the business keeps on going. Now, for me, what is more important is to see that how the banks are going to work in a situation where businesses are given relief by the government and the State Bank of Pakistan. Now, there are couples of schemes that I'm sure you know, or maybe you've heard of. So if you are not able to provide salaries to the employees, the government and the State Bank of Pakistan, in collaboration with the banks, have come up with a refinance scheme where we are offering them a loan for a year where they're able to pay at least 3 months' salaries to their employees. Now, considering A, we're doing the refinance, B, we're actually giving deferments of principal and markup in many cases. C, we're actually having less people coming to work. The functional, performance of the banks have really gone down with that. Uh, it is going to be a very, very tough year. And I Yeah, think it is going to be tough for the next 2 to 3 years to come, because when there is a disastrous recovery for what has happened, हम 6 से 8 महीने को देख रहे होते हैं कि if there is a calamity, if there is a zalzala, सैलाब आ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, आपके पास एग्री लोन्स आपने दिए में. But you see, this is entirely different. This indeed, has an effect not only on, say, for instance, industrial area or agricultural area or services area. It has an effect on the entire economic setup, and it is not for Pakistan, it is global. So what I indeed, see is that I think a new world order is in place. indeed, Honestly, and the new tomorrow, will nothing be like what we are seeing, what we saw in the past. I think we've stepped up, and we are already. I think we're welcoming a new world economic order. And what I see is banks, like, just going back to your question when you said how banks are going to take it. A, banks' incomes will definitely go down because you see you're giving deferments for markup payments and principal payments, and that is for a year. And considering that the businesses might not do well, it may continue for the next year also. Otherwise, one other thing that I really want to mention here is टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स जो नहीं हुए पाकिस्तान में बहुत अरसे में, उनकी अब जरूरत पड़ गई है. Absolutely, आप यू and हैव टू बी हैंड्स ऑन विद टेक्नोलॉजी. So definitely. that's the change So businesses have I to just link this to one thing that, as you said, that it's not just Pakistan. Globally, banks have been affected. Nearly yeah. 70 banks in United States of America have filed for bankruptcy. I've seen many branches in my city, Karachi, closing, and that's due to this effect of the COVID-19. Because of course they have to meet the expenses, and as you said, that they're taking loans just to pay off salaries. So जी. things won't fix up until unless we recover the situation. So at the same time, I have this question as a client, as a user of the banking system and credit cards. As you said that government and state banks is also providing reliefs and all that projects. So usually a credit card has a cycle of payment for 51 days, and Mhm. there's an option of minimum payment. So, is any kind of a relief for the customers where if they go for minimum payment during these hard times, they can, the interest rate could be lower or could be waived off for during this COVID time, because of course everyone's facing a situation. बिल्कुल है. There are actually two things that we're talking about right now. There are two areas of banking. One is corporate banking, where we are dealing with businesses. So corporate businesses, big businesses, and then small and medium enterprises. Your Right. question pertains to consumer banking. So you, as a consumer, if you're using a credit card or you have a mortgage loan or you have an auto loan, बिल्कुल है, the government has given relief to credit card users. आपकी मॉर्गेज पेमेंट्स के अंदर आपको डेफरमेंट मिलेंगे, आपको ऑटो लोन में मिलेगा. आपकी जो बैंक है, ऑल यू हैव टू डू इज गेट अवेयर दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ इन कोऑर्डिनेशन एंड इन कोलिशन विद State Bank of Pakistan, and as soon as you contact your bank, they will let you know. छोटी सी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ. वैसे तो मैं रिटेल में नहीं देखती हूँ, लेकिन I do hear from my colleagues and peers. Biometric system.
बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जब बने तो उन्होंने तो फिर ये भी कह दिया कि इसके बगैर आप अकाउंट ही नहीं खोल सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ बैडली यू सी वी बीन हिट बाय दिस पैंडेमिक, आपका बायोमेट्रिक भी अब डिफर हो गया है। तो यू कैन एक्चुअली ओपन एन अकाउंट जिसमें आपका बायोमेट्रिक उस वक्त अगर हो गया तो ठीक है, अगर आप पहुंच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचे तो मतलब दिस इज नॉट अ हिच एनी मोर। इससे आज से पहले ये आप खोल ही नहीं सकते थे। तो आप यहाँ Right. से देखिए कि पॉलिसीज आर चेंजिंग, फंक्शनैलिटीज आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, we're at the verge of a big change right now. Right. So let's just come towards the lighter side, because I know when we talk about banks, so even in my student life, when it comes to finance, I used to get a headache and all that stuff. So we've got lots of audience with us, and let's see who we have with us. This will ring. Let's see who is there with us, and lots of students and lots of faculty members Okay. with us. Mr. Tariq Iqbal, does that ring the bell? Not really. Not really. Okay, you can look at the small picture on the corner. You might recognize. Right. So Mr. Tariq Ubal is in our admin, and he is with us. All right. This is one of Yeah, your. yeah, yeah, no. Okay. Hi, Now that's one. Mariam. Yeah, Mariam's Mariam, there. Yes. yes, she's with us, and Fahim Ayan, another student of yours. I'm He's happy. sure. I'm sure. All right. Salman Sardar Aziz. Does that ring a bell? बिल्कुल, सलमान को बिल्कुल मैंने पढ़ाया है। सलमान इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया मेरे पढ़ाने की वजह से। सलमान के लिए उनकी कोई एक शरारत अगर आपको याद हो अपनी क्लासेस से? सलमान की मुझे कोई शरारत नहीं याद, बस इतना पता था कि सलमान इज अ टॉल बिग गाय, और मुझे ना वो हमेशा इस तरह होता था कि वो जब मैंने ज्वाइन किया और मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो आई वाज प्रीटी पिटीट, मतलब लॉट्स ऑफ पाउंड्स दैट आई पुट ऑन। तो वो मैं ना इनके मुकाबले में बस वन ऑफ द स्टूडेंट्स ही लग रही हुआ करती थी। तो मुझे याद है जब ये सलमान और इसका एक पूरा गैंग आया करता था, टू फील कि अगर इन्होंने कुछ किया तो मैं क्या करूंगी, मतलब क्या होगा अगर। लेकिन वो अलग बात है कि ये बेचारे मुझसे मतलब थोड़े सहमे में ही रहते थे हमेशा। सलमान तुम सच ना बता देना प्लीज इस वक्त। Actually, Salman was at our session yesterday, और वो जी, सारे और वाक्य was on. So I'm sure he's going to comment. We're going to include that as well. So next we have with us Hira Mohsin Salim. Lots of love, and that's she's my also sister actually. She's just logged in. all right. That's lovely. And Meher Lodhi is watching. Right, that's brilliant. So that's And my daughter who's sitting next in the next room watching me. okay, that's very Thank nice. you. Hi to your daughter from the entire Greenwich fraternity. We Thank have you. with us Mr. Imad Kareem, is also from faculty. जी, इमाद साहब अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल इमाद साहब के साथ बहुत अच्छा वक्त है हमारा। Okay, Oh another wow. bright student, Asad Umar. Another very dear student of mine, Asad, And, और and बिल्कुल he says one of the best teachers ever. We were hoping if she could take 6 courses per semester and we could enroll all of those. मैम इसके थैंक पीछे यू। क्या राज था? क्या ए ग्रेड गारंटीड होता था या क्या होता था? मेरा ए ग्रेड तो क्या, मेरा तो बी ग्रेड भी गारंटीड नहीं होता। अब असद को ही जवाब लिखना पड़ेगा वैसे इस बात का। बट यस, एक चीज जरूर है, जितने लोगों ने भी मुझसे पढ़ा है आई एम श्योर दे कैन वाउच फॉर इट। आई डोंट वांट टू स्पेंड अ सिंगल मिनट इन द क्लास not teaching or not sort of influencing my students to a point कि जहां वो ये सोचें कि यार, you see, in the first class I tell them I'm not here to teach you economics, because the Okay. first thing you get to see, oh Pakistan economy, micro, macro, बड़े hard subjects हैं, बहुत dry subjects हैं। In the first class I always tell them मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप मुझसे पढ़ने आए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप क्लास से अपने 12th या 14th क्लास के बाद when you're going away, you are able to speak about your subject among your friends, among peers, people. You see, आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको अपने सब्जेक्ट से उनसे प्यार करना सिखा देती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम And that किताब पढ़ते रहते हैं लेकिन मैं अपना सब्जेक्ट मैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाती, मैं कोई पाकिस्तान इकोनॉमी की किताब लेके कभी भी क्लास में नहीं एंटर हुई। आई एम श्योर मेनी ऑफ स्टूडेंट्स कैन वाउच फॉर दैट। एंड व्हाट आई रियली वांट इज दिस, कि जो एक प्रैक्टिकल टीचर होता है ना, उसका काम होता है कि वो क्लासरूम एनवायरनमेंट में बैठे हुए स्टूडेंट को कनेक्ट करे टू द एनवायरनमेंट दैट इज आउट देयर। बहुत absolutely, बुकिश ना हो चीजें। तो फिर जब ये स्टूडेंट्स, बिकॉज एज हेड ऑफ क्रेडिट रिस्क
I do interview students when they you see come for banking jobs. मुझे लगता है हम अपने बच्चों को ना बस किताबी कीड़ा बना देते हैं, Totally agree. उनको Totally. प्रैक्टिकलिटी नहीं पता होती. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिकलिटी पढ़ाना और सिखाना चाहती हूँ और मैंने हमेशा किया है. It's been how many years now? Well, 16 years mashallah, since you're 16, associated almost with 16, Greenwich. almost 16 years 16. since you're associated. So, man, that's the reason why a student will always remember you, because जहाँ आप एक कोर्स पढ़ते हैं वहीं पे if a teacher teaches you how to deal with life, the situations of life, trains you for the worst, trains you for things that you're not prepared of, like Correct. contingency plans and all. So that's something that is the real add-on. So let's add a few more messages. Shazia Anwar is with us, another dear Greenwich family member. So I'll add on some more messages. Eman Shan Ali, undeniably an amazing teacher with real teaching abilities and extended knowledge. I'm humbled and I'm, it's, I don't know what to say, but shukriya बहुत बहुत. Thank you. नहीं, अभी तो बहुत मैम शुरुआत है, अभी तो सेशन की अच्छा, शुरुआत है, अभी तो बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी मेमोरीज डिस्कस होंगी. सना फातिमा इज विद अस और वो भी काफी खुश है आपको देख के. बहुत काशिफ. पुरानी स्टूडेंट है सना. वेरी वेरी गुड स्टूडेंट. ओके, देखिए ना कितनी खुशी होती है कि जहां हम आपकी तो खैर सोशल डिस्टेंसिंग कम हो रही है क्योंकि आप काम पे भी जा रही सब है, बट यहाँ पे वी कैन मीट ऑल आवर ओल्ड स्टूडेंट्स, ओल्ड कोलीग्स एंड एवरीथिंग. सो दैट्स द काइंड ऑफ सेशन व्हाट वी हैव क्रिएटेड. काशिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी कह रहे हैं बेस्ट टीचर. इतनी मैम आपकी तारीफ सुनो, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे क्यों नहीं पढ़ा. हाँ हाँ, ये बात सच है. मैं ये सोच रही थी बिकॉज जब मैंने आपको पहली दफा देखा सेशन करते तो मैंने कहा मैंने उमर को पढ़ा. अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है बिकॉज व्हेन you're डूइंग सेमेस्टर्स तो आप बहुत टाइम तो नहीं बट 3 से 4 महीने, 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है तो आप साथ गुजार रहे होते हैं. तो एंड माशाल्लाह 16 years, so you can understand how many semesters and how many students. So I've been trying to look at you and मैं सोच रही थी कि मैंने उमर को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया. तो मैंने नहीं मैं पढ़ाया उनसे मैं उमर उसकी को. रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपना एमबीए कर रहा था उस टाइम पे आप कनाडा में मौजूद थी. बस एंड ये वजह होगी फिर. दैट्स द रीजन. और अब हम उस तरफ आते हैं बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स हैं who wants to build their career outside Pakistan. They're looking for opportunities beyond borders. So, can you share your experience? How was it to work outside of Pakistan? How's the environment? And if someone is willing to move, तो उनके लिए क्या obstacles होंगे to work in Canada or anywhere else out of Pakistan? श्योर. देखिए, मैंने एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी जो मैं हमेशा इनकरेजमेंट के लिए कहती हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये कि हमारे बच्चे जब पढ़ के जाते हैं एंड व्हेन दे आर देयर एंड व्हेन दे आर वर्किंग, they definitely have a class with them because the way they've been taught at schools and colleges, when they go to those universities, most of the students that excel are from Asia and you see this Asian region. तो एक तो ये कि अगर मैंने हमेशा कहा है वैसे अपने स्टूडेंट्स को कि इफ दे आर एबल टू यू सी टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स एंड इफ द फैमिली अलाउज एंड इफ दे हैव एन ऑब्जेक्टिव, तो मैं ये हमेशा चाहती हूँ कि मास्टर्स की डिग्री के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप बाहर चले जाएं. उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास मास्टर्स के अच्छे प्रोग्राम्स नहीं हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं. मैं खुद ग्रेनिच में पढ़ाती रही हूँ एंड आई लिटरली लव टीचिंग द MBA सेशंस. बट वन थिंग इज देयर, वो ये कि आपको ना थोड़ा सा एक्सपोजर जरूर मिलता है एंड दैट इज नॉट ओनली बिकॉज इट इज for academic purpose but for practical reasons also. Like you said कि क्या hurdles हो सकते हैं, क्या चीजें. I always feel that when you leave your comfort zone and go to another country, say for instance हम कनाडा की बात कर लेते हैं, तो आप आपके वो hidden चीजें जो घर में आपके या आपके अपने होम टाउन में रहते हुए वो थोड़ी suppressed होती हैं, even they you realize that you have those added advantages to your with your personality and with yourself. I think that comes out. Then the way we teach our students and the way our students have gone through the examination systems and आपके presentations, आपकी quizzes, आपके assignments, ये सारी चीजें आपको एक्चुअली रेडी कर रही होती हैं अगले सिस्टम के लिए जहां जा करके बहुत कंपटीशन भी है. और अब स्पेशली बिकॉज आपको पता है कि जो एक
बड़ी कम्युनिटी जो है वो चाइना की है। आपको कनाडा में बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलेगी, बहुत कंपटीशन मिलेगा उन लोगों के साथ। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे बच्चे और स्पेशली पाकिस्तान के गए हुए लोग हमेशा एक्सेल करते हैं। तो एक तो ये कि आप अपने कंफर्ट जोन में से निकलते हो, दूसरा ये कि आपके अपने अपने हिडन टैलेंट्स आपको पता चलते हैं, और तीसरी चीज ये होती है कि कभी कभी ना चैलेंजेस लेने से यू रियलाइज दैट यू नो व्हाट, यू कैन डू इट। तो ये एक बहुत वो Alhamdulillah, I had a really good time there in Canada. I was actually working not uh, uh, only for banks. We had oil and gas companies also. We had construction companies. बहुत बड़ी 3 construction companies थी जिनके साथ हम काम करते थे. But 3 largest banks, TD Bank in Canada, it's BMO, BMO जिसको कहते हैं वो, Bank of Montreal, और इसी तरह CIBC, ये तीनों बैंक्स हमारे, हम इनके पैनल पे थे, और हमने ये हम रिक्रूटमेंट फ्रॉम मैं और मेरा हस्बैंड, माय हस्बैंड आल्सो टीचर्स एट ग्रेनिच, सो क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम आल्सो। तो मैं और आमिर दोनों यू नो वी वर टेकिंग केयर ऑफ बिजनेस देयर, और माशाल्लाह वी डिड वेरी वेल, you know, because we knew banking, we wanted to come out of our comfort zone and sort of do something for ourselves. I thoroughly enjoyed my time in Canada, और जो भी जाना चाहे बस मैं ये कह सकती हूँ कि I am there. You know, Amir is there. If you need any help, please let us know. We would be very much happy to guide our students, or do anything that we can do for you. But yes, opportunities हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहती हूँ, सॉरी अगर मैं नहीं कहूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप अपने पाँव पे खड़े हो, अपना एक्सपोजर ले लें, and you've done well in your life, at one point in time do think to sort of come back to Pakistan, because I would definitely want you to contribute here. See, we need a lot of people to do well in our country. In economic point of view se to hai hi hai, but otherwise also we need good people who have exposures to come back to Pakistan and bring those experiences with them. तो वापस भी आ जाए, मैं ये भी कहती हूँ फिर। Definitely. I'll add on few more messages. So there's student Iram Khan. She says, "Hello, ma'am. How are you? You and Sir Amir taught me when I was in BBA." जी, इरम इज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम इरम, थैंक यू। आपको याद आ गई हैं? बिल्कुल इरम मुझे याद आ गई हैं, इरम मुझे अच्छा, बिल्कुल याद आ गई। मजे और की बात बताता हूँ आपको। हम्म, इरम मेरी बहन है। माशाल्लाह, तो फिर आपके फादर वाज आल्सो एसोसिएटेड विद ग्रेनिच? Yes, yes. ओके, ओके। Right. तो आई हैव अ बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम। इरम को पता है मैं उसके साथ बहुत दफा बात करती थी। चले, वंडरफुल थैंक वंडरफुल। यू सो मच। शफीक और रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ये भी सर हमारे, ही इज द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हेड, एंड ही you know is very involved with all the TV channels as well, and very तो learned अब when it comes to आपने तो economics. उनका इंट्रोडक्शन करा दिया, लेकिन एक इंट्रोडक्शन मेरे पास भी है। शफीक जी साहब जी। मेरे उस्ताद हैं, और मेरे वाह पीएचडी सुपरवाइजर भी रह चुके हैं। वाह वाह तो वाह मेरे वाह। लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि उन्होंने टाइम निकाल कर मुझे एक मैसेज भेजा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आई एम सो ऑनर्ड, थैंक यू। राइट। सो मैम, अब थोड़ी सी आपसे एक मैं सवाल करता हूँ। यूजुअली जब कॉपीज चेक की जाती हैं तो कुछ ऐसे जवाब आते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। तो कभी इलास्टिसिटी डिमांड का कर्व बनाने में या सप्लाई कर्व बनाने के अंदर कोई आपको ऐसी आंसर शीट में अनयूजुअल चीज आई हो जो आपको याद आ गई हो, या जिसके ऊपर आपका कहका निकल आया हो कि ये बच्चे ने लिखा है? अच्छा, मेरे साथ ना एक कॉमन चीज होती है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मुझे ना बहुत, जब मैं कुछ चीज बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाऊं और फिर वो चीज स्टूडेंट ने गलत की हो, और मैं उसको ना जोर से ना बड़े बड़े 2 मार्क्स लगा के लिखती थी, प्लीज सी मी इन द क्लास। ये मेरा एक पेट जुमला है। आई एम श्योर मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू इट। राइट। जब मैं पेपर्स, बिकॉज यू नो हाउ ग्रेनिच का तो बड़ा फेयर सिस्टम है, आपको पता है, हम जब पेपर्स चेक कर रहे होते हैं तो कॉपीज पे नाम नहीं लिखे होते। नाउ आई डोंट नो हु दिस जेंटलमैन और दिस लेडी इज, आई हैव टू मीट देम कि ये हैं कौन जिन्होंने एक दफा भी ठीक नहीं लिखा उस चीज को। तो मैं लिखती थी, प्लीज सी मी इन द क्लास। अब 40 बंदों की क्लास है, मैं कहती थी, सो हु इज गोइंग टू कम एंड सी मी? नो वन वुड स्टैंड अप। मैं कहती थी, नहीं, देर आई हैव रिटन अ कमेंट, तो कौन लोग हैं जिन्होंने उठ के मुझसे मिल? नोबडी वुड स्टैंड। तो फिर मुझे एक एक मार्किंग शीट देखनी पड़ती थी कि वो कौन हजरात हैं जिनसे मैंने मुलाकात करनी है क्लास में। तो ये बहुत दफा हुआ मेरे साथ।
और वाकई जब जाहिर है कोई इतनी मेहनत से चीज पढ़ाई जाए और बिल्कुल आउट और बिल्कुल अनयूजुअल सा जवाब है, तो जाहिर है हंसी की जगह एक टीचर को तो गुस्सा ही आएगा। फेलो स्टूडेंट जरूर हंस सकते हैं, बट एक आपसे मैम सवाल मैं करूंगा, यू बीन टीचिंग फॉर ओवर एन डेकेड नाउ माशाल्लाह। जब से ये डिजिटल की तरफ हम बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया है, have you seen a change in the students, in their behavior, in their focus, like comparing the students of the 2004s 5s to the students of now? Do you feel any difference in them? बहुत। और इनफैक्ट जितने मेरे स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि मेरा एक बहुत बड़ा लेक्चर होता होता है इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बताऊं हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब बहुत सारी दफा जब मैं क्लास में आके बात करती थी तो मैं यूं कहती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपको पता है ना कि ये अब मैं क्या आपको याद, हाँ, बास्फोरस, बास्फोरस की लीज जो है वो एक सर्टेन टाइम के ऊपर जा करके खत्म हो जाएगी, एंड देन दिस एंटायर रीजन विल सी के बास्फोरस जो है वो टर्की की चूंकि ओनरशिप में। अब ये बात जब मैं इस तरह करती हूँ तो मैं कहती हूँ आपको पता है ना इस चीज का, तो द स्टूडेंट्स विल बी लाइक या मिस वी नो। अच्छा तो फिर क्या पता है आपको? दैट्स माय एग्जैक्टली यू नो। नहीं मिस वो बास्फोरस उधर टर्की में, अच्छा तो फिर क्या है उसमें? नहीं मिस वो हमें पता है कि वो एक लीज है, वो कुछ वो है मिस वो जो हो रहा। So I tell them that this is where you guys go wrong. What we Right. do is we read news on, unfortunately, on social media. Right. अखबार हमने पढ़ने छोड़ दिए, न्यूज हमने देखनी छोड़ दी। आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमी पढ़ाते हुए मेरा पहले क्लास में आकर ये होता है कि इफ यू गाइज डू नॉट हैव बिजनेस रिकॉर्डर्स एट होम, make sure just before my class please go to the library and have a look at it, because I'm going to ask you कि business recorder में आज क्या खबर आई है। और आपने उस खबर को हेडलाइन नहीं पढ़ लेना, आपने उसके नीचे पढ़ना है। Yes, Barney. ये एक Definitely. चीज है, हम पढ़ना भूल गए, हम Very, रीडिंग नहीं करते। हम एकदम से हमें कोई खबर पता चली, जी 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 हमें पता है कि ये हुआ था, अच्छा क्या हुआ था, वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई थी, नहीं वी डोंट नो, बिकॉज हमने उसको बहुत सरसरी पढ़ा हुआ है। तो प्लीज मेरा ये एक, अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आई स्टिल मैं ऑफिस में भी ये चीज कहती हूँ, हर डॉक्यूमेंट को पढ़ें, हर चीज को रीड करें, देन यू स्टार्ट लर्निंग एंड नॉट, वो आपका लर्निंग कर्व पर डेवलप होता है, फिर एक टाइम आता है आप यू गेट अलोंग विद इट, फिर आप एक सेकंड में एक डॉक्यूमेंट को पढ़ लेते हैं। तो सोशल मीडिया ने बहुत हमारे साथ भलाई की है, अच्छाई की है, हमें अच्छी बातें सिखाई हैं, बताई हैं, हमारा एक्सपोजर बढ़ाया है, ग्लोबल विलेज बना दिया है दुनिया को। बट एट द सेम टाइम we have forgotten how to learn, research, investigate, analyze, and then you see have a review on something. हम लोगों के रिव्यूज को पढ़ के अपना रिव्यू बिल्टअप कर लेते हैं। ये absolutely. नहीं होना I, चाहिए I बस। second this because being associated with the media industry for over a decade now, I would say कि ये जो हमारी रीडिंग ना करने की आदत है, इसका नुकसान ये हुआ है कि whatever we see on TV or radio or any person giving his opinion, we forward it without the research, as you just said, कि हम उसको analyze नहीं करते, समझते नहीं है. But if बिल्कुल we are reading on our own, if we are connected, if we have the knowledge, if we know what's going around the globe, we can always correct that person on the television. बिल्कुल हमारी as a generation, as हमारी future generations अगर एक intellect वाली हैं, so उससे एक पूरा environment एक बहुत बेहतर हो सकता है। And बिल्कुल ठीक। because of this, जो एक manipulation होती जाती है या जो एक misguidance मीडिया के बहुत different forum से होती चली जाती है, you can always counter it. And for that, we have to build our own opinion, and for that, we have to do our own research. So that is बिल्कुल very important. So बिल्कुल ऐसे। I'll add on some four new messages, and let's see who we have with us now. Ikra Anwar Shah, कहती हैं, I've been taught by Miss Mahwash back in 2008. She taught me two courses, and yes, we started reading business recorder because of her. आई एम ऑनर्ड इकरा, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। मैम कितनी खुशी होती है कि आप अपने कोई पुराने स्टूडेंट को आज भी, क्योंकि जाहिर है कहीं बम्प इन करें आफ्टर 10 years, 12 years, 15 years, and they're doing well in life. So how is that feeling? Oh, I can't tell you. This is why I'm still teaching and associated with this university. और ये मैं आपको बता दूं, इस मैं अक्सर लोगों से कहा करती हूँ, इस यूनिवर्सिटी के साथ मैंने ग्रो किया है, बिकॉज व्हेन आई केम हियर आई वाज वेरी यंग,
it's quite a lot of years ago now. और I have actually grown up with my students and with this university. ये मेरा दूसरा घर है. I literally call it second home. और मैं अपना कोई वक्त मेरे पास हो या ना हो, मैं ऑफिस में कभी कभी बहुत बिजी होती हूँ. एट टाइम्स माई सैटरडेज आर ऑल्सो एंगेज्ड. आई मेक श्योर इवन इफ आई टेक वन कोर्स आई डू इट. रीजन बीइंग, मुझे जो कमिटमेंट एक फील होती है ना, जैसे कल आपका स्टूडेंट कहीं गया, उसने आपके बारे में एक अच्छी बात की, आपसे उसने एक अच्छी बात सीखी. अच्छा, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू से, जितने टीचर्स हमें देख रहे हैं या बाद में इसको देखेंगे, ये एक सदका जारिया है. आप क्या ऐसी चीज करेंगे जो फिर बरसों तक चलती रहे. आप एक दरख्त लगाते हैं, रीजन बीइंग दैट इट्स गोइंग टू बी अ रियली बिग ट्री वन वन फाइन डे, एंड देन यू सी यू हैव द सवाब ऑफ द दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. आप किसी को पढ़ाते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, वो अपनी हलाल रोजी कमाता है. दिस इज सदका जारिया. So I love to do it because I think I'm contributing towards betterment of not only an individual but to the society also. Right, ma'am. So we have a question here, and the question is from Fahim Aryan. He asks, any suggestions for those who are seeking for an internship or job but having really hard time to find it because of quarantine and the lockdown? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इसका जवाब बल्कि किसी और को भी देकर आई हूँ. जॉब्स, आई एम अफ्रेड टू इन्फॉर्म यू कि थोड़ा टाइम आप लोगों को रुकना पड़ेगा. रीजन बीइंग के अभी थोड़ा सा जो है वो अच्छा टाइम नहीं है. यू नो, बैंक्स भी थोड़े, लाइक आई सेड, वो एक डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट में आ गए हैं जो हम ऑलरेडी अदरवाइज नहीं कर रहे होते. तो आई थिंक बहुत एनर्जीज लग रही हैं एक चीज को हैंडल करने में. इंशाल्लाह आई डू सी डाउन द timeline, say for instance September October tak things will be all right. However, as far as internships are concerned, अगर आप किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो वो जरूर केटर कर रहे हैं, बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि आप भी इस टाइम पे बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं. यू सी, सेफ्टी इज एब्सोल्युटली मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. आई अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम. मैं तो उन लोगों में से हूँ जो खुद अपने पास इंटर्नशिप्स ऑफर करती हूँ. मेरे स्टूडेंट्स को पता है ये बात, और मेरे Right. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ इंटर्नशिप की है. लेकिन मेरे अपने थोड़े से ऑनेस्टली इस वक्त हाथ बंदे मुझे नजर आ रहे हैं. रीजन बीइंग कि मैं लोगों के लिए नहीं चाहती कि खुदा ना खास्ता कोई सेफ्टी हैजर्ड हो जाए, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती. आप देखिए ना, जहां हमने यूनिवर्सिटी बंद कर रखी है, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त ले लीजिए इसके लिए. आई एम श्योर इंशाल्लाह इन अनदर 2 to 3 months थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक we just have to wait for the right time. Definitely. So, ma'am, as much as I'm loving this session, we are coming towards the end. और बड़ा एक अच्छा टाइम रहा है. आपके सारे स्टूडेंट्स भी देख के आज आपको काफी एक्साइटेड थे. सो कीपिंग द होल करंट सिचुएशन इन माइंड, जो कि आजकल चल रहा है और आने वाला टाइम भी इज वेरी अनसर्टेन, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग राइट नाउ, और अपने फ्यूचर में करियर को लेके जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, what field would you suggest and what direction would you guide them in? अच्छी बात है जी, बिल्कुल ठीक. आपने कहा कि जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है सपोज टू अदरवाइज. यू नो, जो हम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं उससे बहुत कुछ चेंज हो गया. देखिए, 2 चीजें मैं जरूर कहूंगी, मैं स्टूडेंट्स को अपना हमेशा से कहती हूँ. ट्राई टू हैव अ मिक्स एंड मैच ऑफ बिजनेस एंड अकाउंट्स इफ यू कैन. ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ अकाउंट्स को मैच करें बिजनेस के साथ. और अब now that I'm looking at the situation, the way it's changing, technological advancements are taking place, I uh, thoroughly suggest mix and match your business degree with IT degree. Either do something in IT infrastructure, software development, you know, IT support, अगर आप interested हैं उसमें तो, but have a mix and match always. I did my bachelor's in business and had to match it with economics का masters. ठीक है, तो I have a mix and match. Number 1. Number 2, देखिए, वक्त बहुत बुरा है, मैं मानती हूँ. आप बाहर नहीं जा सकते, आप अच्छे खाने नहीं खा सकते, you're not meeting friends. बहुत हालात ख़राब हो गए हैं. और हमारी एज के जो मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो तो बेचारे ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं मैं समझ सकती हूँ इस वक्त. लेकिन एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए उस काम को करने के लिए जिसका आपके पास वक्त नहीं था. ऑनेस्टली, रीडिंग करें,
अच्छी किताब पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें, पॉलिटिक्स पढ़ें, लॉ पढ़ें, अपने आप को यू नो मेक श्योर, ये ना एक इंसान का, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, वेयरिंग अ लवली ड्रेस, a Gucci, this and that, the other, a Louis Vuitton, whatever. But then, as soon as you start speaking and you don't know what you're saying, the entire impact goes down the drain. So, when you speak, you tell people what you know. जब आप जानते ज्यादा होंगे, इम्पैक्टफुल बातचीत करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, आपकी नॉलेज होगी, पढ़ाई करें, प्लीज अच्छी सी किताबें ले आएं, जाकर कहीं से, घर पे बैठे फैमिली को टाइम दें, थोड़ा सा अल्लाह को भी याद कर लें, अम्मा अब्बा को देखें, उसी घर में कहीं रहते हैं अब आजकल, आपको नजर आ रहे होंगे। तो टेक इट पॉजिटिवली, ये चीज मैं जरूर कहूंगी, टेक इट पॉजिटिवली। जो ही हम सबसे नेगेटिव होते हैं ना, चीजें खराब हो जाती सबसे जरूरी चीज मैम ड्यूरिंग दीज टेस्टिंग टाइम्स इज टू स्टे पॉजिटिव, is to take care of your mental health, because हैं। what I've noticed around कि इस time period में people are getting frustrated, they're becoming tense, बिल्कुल they're very worried about the future. But if we look at the bright side, there are new opportunities that are opening. The world has came closer. एक global जो doors open हुए इस time period में, opportunities open हुई हैं. So one has to adapt to those and look at those different opportunities coming करेक्ट। towards. मैम इसमें एक चीज आपसे और पूछूंगा, जो आजकल एक ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि आपने you've been teaching for over a decade now, माशाल्लाह, तो अब का जो टाइम पीरियड है, आपने देखा है लोग आर्ट की तरफ बहुत आ रहे हैं, क्रिएटिविटी की तरफ बहुत आ रहे हैं. लाइक पहले it was all business, doctor, engineers, but now we've seen that people are coming towards chef बनने के लिए लोग आ रहे हैं, they're coming towards fashion designing, they're coming towards the media side. मीडिया बहुत ज्यादा ग्रो किया है last 5-10 years में. So what would you advise to all those people who work toward जिनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव साइड पे चलता है? अच्छा, आई डोंट नो इफ आई एम रियली अ गुड पर्सन टू एडवाइस हियर और नॉट, बट मैं आपको बताऊं, मैं खुद थोड़ी सी ना टेक्निकल साइड के ऊपर ज्यादा हूँ. मेरा अपना दिल ये करता है कि मेरे स्टूडेंट्स के पास एक टेक्निकल डिग्री और एक क्रिएटिव डिग्री हो, तो आई एम ओके विद दैट. बट द वे द वर्ल्ड इज चेंजिंग, लाइक यू सेड, एंड आई टेक इट फ्रॉम देयर, yes, now creativity, arts, you see, media has their own roles to play. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप फेयर हैं और अगर आपने अपने काम को अच्छे तरीके से सीख लिया है, नो मैटर व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, यू विल एक्सेल. Two things are important. If you know your job and you're hardworking and honest, no matter what, आप मीडिया में हैं, बहुत जरूरत है अच्छे लोगों की मीडिया में. मैं समझती हूँ जितना, देखिए मीडिया, मैं और आप बात कर रहे हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, और ये एक छोटा फोरम है. लेकिन जब आप न्यूज पढ़ रहे हैं कहीं बैठकर, आप कहीं पर एक टॉक शो कर रहे हैं, तो एक छोटे से इलाके में, पंजाब का एक छोटा सा कोई इलाका होगा, कोई सा नाम ले लेते हैं, कामों की, वहां बैठ के चारपाई पे 5-6 लोग बैठे हैं और वो आपका टॉक शो सुन रहे हैं. वो आपको सुन रहे हैं, वो आपसे कुछ सीख रहे हैं. मैं, आप यकीन माने, अक्सर क्लासरूम में कहती हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिल जाए, मैं सारे मॉर्निंग शोज बंद करवा दूं इस पाकिस्तान में. उसकी वजह ये है, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में. आप मेरे साथ हैं उमर, परफेक्ट. मैं मॉर्निंग शोज बंद नहीं कराऊं, मैं शायद ये कह दूं कि चूंकि खवातीन टाइम दे रही है ना, तभी वो मॉर्निंग शोज चल रहे हैं. इसका मतलब है आपको रेटिंग भी मिल रही है, लोग भी देख रहे हैं, व्यूअरशिप भी है. मैं कहती हूँ, आप ठीक है, आप उसमें दिखा दें कि शादी कैसे करनी है, मेकअप कैसे, परफेक्ट, दिखाएं जरूर. मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको देख के खुश होते हैं, लेकिन उसी दौरान में एक अच्छी चीज भी बता दें ताकि लोग उसको भी सुन लें. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया के ऊपर. और जहां तक आपने कहा कि लोग शेफ बनना चाहते हैं, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट था. We've got all the time in the world. इतने टाइम बाद मुलाकात हुई है, तो I won't put a time constraint है. नहीं, वो मुझे लगता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे इस किस्से को बिल्कुल याद आ जाएगा उनको. देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय क्लास, में उसका नाम भी नहीं ले रही बिल्कुल भी, और उसकी आइडेंटिटी भी छुपा रही हूँ. वो माशाल्लाह कोई चौथी दफा फेल हो गया मेरे कोर्स में. अब जब वो चौथी दफा एनरोल होकर, 3 दफा फेल हुआ, फोर्थ टाइम ही गॉट एनरोल्ड अगेन, आई लिटरली वॉक्ड अप टू हिम एंड आई सेड, बच्चे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कम लेट्स टॉक. बिकॉज या तो मैं बहुत बुरी टीचर हूं कि तुम वाकई नहीं पास हो रहे हो, और या शायद तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन, हमें बात करनी है. तो हमने खैर कट इट ऑल शॉर्ट. बात करने के बाद ये हुआ कि उनको शेफ बनना था.
और उनके वालिद साहब को बिल्कुल ये पसंद नहीं था। उन्होंने कहा था तुम ग्रेनिच से तुम्हारी लाश निकलेगी डिग्री समेत। लेकिन तो बहरहाल मैंने, बहुत लंबा किस्सा है, मैं आई डोंट नो व्हाई बट आई रीच्ड अप टू हिज फादर वन फाइन डे। आई टुक अ नंबर, मैंने क्रिस्टल से कहा कि मुझे इसका नंबर चाहिए, और नंबर लेके मैं घर गई, मैंने उनको कॉल की एंड वी स्पोक एंड ही सेड कि जी मेरा एक ही बच्चा है और मैं चाहता हूँ कि वो, मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उस स्टूडेंट के साथ बात की और मैंने कहा बच्चे एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ ट्रेड ऑफ। तुम ये डिग्री कर लो, मैं तुम्हारे अब्बा से मनवाऊंगी कि वो तुमको न्यूयॉर्क culinary स्कूल भेजेंगे जहां तुम पढ़ना चाहते हैं। Wow. Trust me, he did his degree, he graduated, he went to that culinary school, और उसको पहला गिफ्ट जो उसके वालिद ने दिया, उसने मुझे उसकी तस्वीर खींच के भेजी थी, मुझे याद भी याद है, एक बहुत बड़ा सा एक जबरदस्त किस्म का कटलरी सेट था जो मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें कोई 50 किस्म की मुख्तलिफ छुरियां थी चीजें काटने के लिए। आई हैड नेवर सीन दैट बिफोर, बट आई फील अगेन दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू डू फॉर हिम। तो ये शेफ वाली आपने बात की तो मुझे वो याद आ गया। ही बिकेम अ रियली गुड शेफ देन। एंड एक अच्छे टीचर की सबसे अच्छी बात ये होती है जो हमेशा यादगार रह जाते हैं, वो अपने स्टूडेंट का वो हिडन टैलेंट, वो हिडन पोटेंशियल देख लेते हैं और उसको उसमें हमेशा सपोर्ट एंड प्रमोट करते हैं। एंड दैट्स व्हाट मिसिंग दीस डेज के एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक पुश, एक छोटा सा पुश चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, लिटिल लाइट ऑफ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट नीड्स टू create wonders. So मुझे that's the बहुत one. ही हंसी आ रही है एक और बात पे। वैस खान बहुत मसरूफ आदमी, अब तो आपको पता है वैस तो हमें नहीं देख रहे होंगे इस वक्त। जी. वैस मेरी क्लास में, ही वॉक्ड इन एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड वैस व्हाट इज दिस हेयर स्टाइल, एंड आई मीन ही सेड मिस ये तो मेरा स्टाइल है प्लीज। मैंने कहा नो नॉट हैपनिंग, ये बाल शाल कटवाएं आप जरा, यू नीड टू लुक लाइक अ बिजनेस स्टूडेंट, कम ऑन, आई मीन देयर हैज टू बी। अच्छा वो ना बड़ी पोनी शोनी कस के ना बना के आना शुरू हो गया, बस मैंने कहा वैसे इस तरह नहीं, मुझे नहीं पसंद ये, यू हैव टू लुक लाइक प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर बिजनेस स्टूडेंट। तो माशाल्लाह फिर अल्लाह ने उसको, आपको पता है, बड़ी तरक्की दे दी, बड़ा नाम हो गया उसका। वन डे आई वॉक्ड इन द यूनिवर्सिटी, में गेट से एंटर हुई तो वैस सामने खड़ा था, वो आ गया एंड ही ऑलमोस्ट इज लाइक मिस हाउ आर यू, आई एम लाइक हाँ वैस तुम्हें बहुत मुबारक हो, मुझे पता है कि तुम फेमस हो गए। सर मिस वो अगर आपने मेरे बाल कटा दिए थे ना, मैं ना फेमस होता, तो थैंक यू वेरी मच, यू लेट हेयर। और फिर मैंने बाद में रिसर्च की, मुझे पता चला वैस इज फेमस फॉर हिज हेयर Yeah. अमंग द फैंस। तो मैंने कहा शुक्र है मैंने बाल नहीं कटाए बच्चे के, वरना कैसे तो मशहूर हूँ। थोड़ा सा एट टाइम्स डिफरेंट होना, ये एक यूनिकनेस भी पड़ता बच्चे है, की भी होती है, बट देन बिल्कुल अगेन उसमें बिल्कुल। जरूरी चीज ये है कि फोकस हो, एज यू सेड कि आप चाहे कोई भी आपकी स्किल है, इफ यू आर गुड एट दैट skill, you should believe in yourself and you will always excel. Focus should be there and the self belief should be there. And what we're seeing, the change of trends in education as well, that rather than full degrees, now even Oxford and Harvard are focusing on skill based education that बिल्कुल is ऐसे ही है। enhancing skills of people, that is a wider term. So of course times are changing, things are changing, but एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, और वो ये है कि जो एक फोकस है, डिटर्मिनेशन है, और जो एक एक्सपीरियंस का रोड है, उसका कभी कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा. यू हैव कोई टू नहीं है। walk your way through, you have to learn through your experiences, and करेक्ट, every time you fail, that is the biggest, मैं कहता हूँ आपका learning curve होता है, every time बिल्कुल you fail. So one should बिल्कुल be positive as well. So बिल्कुल ma'am, ऐसे। Indeed, it was a pleasure having you. बहुत अच्छा लगा, बस ये अफसोस हुआ कभी आपकी क्लास में नहीं आया होता तो फिर आज कुछ और मजेदार वाक़े आज हम शेयर कर रहे होते. बिल्कुल But बिल्कुल definitely we'll meet sometime soon, inshallah, once the COVID इंशाल्लाह। ends. And जाने से पहले आपकी ग्रेनिच के साथ, वैसे तो बहुत मेमोरीज हैं, बट एक फेवरेट मेमोरी कोई अगर आपकी ग्रेनिच के साथ. ओके, फेवरेट मेमोरी, आई रियली हैव टू थिंक अबाउट इट बिकॉज बहुत सारी, वाकई में मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। आई थिंक कोई सबसे अगर फेवरेट मेमोरी मेरी है तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी फेवरेट तो मैं नहीं इसको कह सकती, लेकिन एक ऐसी मेमोरी जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और मैं आज आपके इस प्रोग्राम के, आई एम नॉट श्योर इफ मैडम सीमा इज वाचिंग दिस और नॉट, लेकिन मैं आपको बताऊं व्हाट अ वंडरफुल मैनेजर शी इज, because she knows how to have people work for her. एंड इन एन इंस्टीट्यूशन, मैंने बहुत जगहों के ऊपर, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ग्रेनिच इज वन प्लेस जो कि मेरी एक ऐसी जगह बन गई है जहां मैं खुशी से आती और पढ़ाती हूँ। आप नोट कीजिएगा कि आपके ग्रेनिच के जितना स्टाफ है
वो सारा बहुत पुराना है। जी। तमाम लोग ऐसे हैं कि जो पुराने हैं, सारे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। जमील भाई को देख लें, कर्नल साहब को देख लें, आप मियाँ साहब को देख लें, बतूल को देख लें। तो मतलब देयर आर सो मेनी पीपल। ये मैं समझती हूँ कि ग्रेनिच की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ये, कि वो लोगों का ख्याल रखते हैं। और इसी ख्याल में मैं इस तरह फॉल की कि विद माई सेकेंड चाइल्ड व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, the doctor said I'm not able to sort of leave my house and be on the bed rest and stuff like that. तो मैं अपना सेमेस्टर पढ़ा रही थी, और मेरी कमिटमेंट ऐसी होती कि मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकती। तो मैंने आई थिंक मैडम सीमा से मेरी बात हुई थी, सईद साहब भी बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा सेमेस्टर 1.5 महीने का रहता है और मैं पढ़ाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अगर आप कुछ फैसिलिटेट कर दें। आपको पता है उन्होंने मुझे इतना, मुझे नहीं पता मैडम सीमा को खुद ये बात याद है कि नहीं, बट उन्होंने मुझे इतना फैसिलिटेट किया कि माई कार वुड एक्चुअली ड्रॉप मी इनसाइड ग्रेनिच, और मैं बस एक 2 3 4 स्टेप्स का वॉक करके, बी रूम नंबर था मेरा, जो जहां जाकर मैं अपनी क्लास ले लिया करती थी। और उन्होंने मुझे डिप्राइव नहीं किया मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ने से, क्योंकि अगर मैं अपनी कमिटमेंट रखते हुए अपना सेमेस्टर छोड़ती तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाती। तो ये एक चीज मुझे उस दफा लगी। और इस तरह के मल्टीपल इवेंट्स जहां वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, ये एक चीज ऐसी है जो मैं समझती हूँ कि ग्रेनिच इसमें आउट क्लास है। हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट इस केस में। Indeed, and that is why we call ourselves Greenwich family, because we वी do डू। take care of each other. So, बिल्कुल। indeed, it was a pleasure, ma'am. It was so nice to have you. और सारे आज स्टूडेंट्स और पुराने लोगों से मिलके आपको कैसा लगा, और इस लाइव सेशन के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? What would you like to say on that? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी हम कितनी बातें करेंगे, और मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू बी, कहीं बोर ना हो जाए थोड़ी देर के बाद। बट आई थिंक इट ऑल सॉर्ट ऑफ यू सी केम इन व्हेन आई मेट यू एंड वी टॉक्ड अबाउट इट। सो गुड टू सी ऑल माय स्टूडेंट्स। शिफा ने भी बीच में एक मैसेज किया, मैंने उसको देखा। शिफा मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मेरी पुरानी स्टूडेंट है, हम आज भी मिलते हैं। ओके, थैंक यू शिफा का ये कमेंट अब आप दिखा रहे हैं मुझे, तो थैंक यू शिफा। वंडरफुल मेमोरीज जी। मेरी बहुत एसोसिएशन है ग्रेनिच के साथ, लोगों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, सब लोगों के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने अपने आप को कनेक्टेड रखा, जिस तरह ग्रेनिच ने सारे टाइम में आ करके अपना रोल अदा किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। अभी जो मेरी क्लास थी पाकिस्तान इकोनॉमी की, हमने पूरी क्लास जूम पे की और हमने पूरा सेमेस्टर गुजारा। आप यकीन कीजिए वो स्टूडेंट्स मेरे आज भी मेरे साथ इन टच हैं। अभी हम बजट के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज उन्होंने मुझे एक मैसेज किया एंड आई हैव टू सॉर्ट ऑफ गेट बैक टू देम कि बजट कैसा था, क्या चीजें थी उसके अंदर। ये जो कनेक्शन है ना, ये आपका हमारा ग्रेनिच की वजह से बनता है और फिर आगे चलता चला जाता है। आई चेरिश इट, आई थॉरली चेरिश इट। एंड वी कंप्लीटली चेरिश द फैक्ट कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आज आपसे मुलाकात हुई और एक रीयूनियन हुआ आफ्टर अ व्हाइल। सारे पुराने स्टूडेंट्स एंड एवरीवन आर हियर टुगेदर। थैंक यू फॉर मेकिंग देम मीट मी। थैंक यू। You're completely welcome, and thank you for your time. Stay safe, stay happy, keep smiling, and keep doing the wonderful work that you've been doing for years, man. Thank you very much. All right, thank you. Khuda Hafiz. Hafiz. So you heard Miss Mahwash Amer and the wonderful thing she has to say, और उनका experience रहा है banking sector में, and how she's leading the whole credit risk management team, and जो जितनी उन्होंने हमारे साथ बातें शेयर की बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, आगे अगर आप बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके हवाले से, अपनी टीचिंग करियर के हवाले से, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड की जो एक खास बात होती है वो भी उन्होंने शेयर किया। एंड ऑफ कोर्स दैट ब्रिंग्स स्माइल्स ऑल अराउंड। और जिस तरह से हमारे साथ सारे आज लोग रहे हैं जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कमेंट किया है, वेल सबके चेहरों पे मुस्कुराहट मैं यहाँ से महसूस कर सकता हूँ। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, एंड दैट्स द बेस्ट बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट, बिकॉज इट लास्ट फॉरएवर. So this was our session for today. We'll definitely be back tomorrow, inshallah, with another session with another guest. And please do leave your feedback in the comment section. आप किस टॉपिक पे अगला सेशन देखना चाह रहे हैं, आप किस गेस्ट को हमारे लाइव सेशन में देखना चाह रहे हैं, please leave your comments. And until next time, stay safe, stay positive, keep smiling, and Pakistan Zindabad.